बहुत ज़्यादा तदब्बुर है इसमें, so much. And hopefully I am writing a column, and now you know the very hard issue of the moon sighting. So here is the clue whether it's necessary to sight it by your eyes or not. This I will explain in that column, and maybe we can arrange a very detailed talk on this one. Okay, so Quran is the last book. It is not the first. It is the last. In this series, the series which is going on, this is the last revelation in that one. So the last revelation will remain for till the end, means no other books are coming. So it's a live book. Live book means that it will tackle all the challenges which will come in the time ahead. ये जिंदा है, जिस तरह हम कहते हैं ना, ये जिंदा बंदा, ये जवाब देगा, तो ये जिंदा है, ये जवाब देगा, पूछा जाएगा जवाब देगा, बहुत सौ को दिया है औरों को भी देगा, सो ये जवाब देगा, ये जिंदा है. Is science the ultimate fact? No. क्योंकि जो चीज ग्रो कर रहा हो वो तो अल्टीमेट हो नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, लेकिन हमें पता होता है कि कुछ चीजें एस्टेब्लिश्ड हो जाती हैं. सो द एस्टेब्लिश्ड साइंस इज अ फैक्ट, बट मे बी सम प्रॉब्लम विद द इंटरप्रिटेशन. ओके, कैन वी लर्न साइंस फ्रॉम द होली कुरान? नो, वी कांट. Newton's laws of motion I cannot understand from the Holy Quran. But the Holy Quran will say कि ये सूरज चांद को पकड़ नहीं सकता. वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, वो सब अपने अपने मदार में जा रहे हैं, वो ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकते. So these are all the Kepler laws. The Kepler laws are actually these laws. लेकिन वो हमें केपलर ने समझाए, वो हमें कुरान ने नहीं समझाए. केपलर ने समझाए तो तब हमको कुरान समझ आए कि हाँ कुरान तो यही कह रहा है. तो इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है. मीन्स we cannot derive laws of science from the Holy Quran, but we can understand the science in the Holy Quran through science. So the one I said, that if you know science, then you know 1/3 tafsir of the Holy Quran in a very good manner compared to our scholars like ulama. They don't know science. This is a very big gap. They don't know science, we don't know Quran. So when we go to them, they teach us the one, you can say the two parts of the Quran, while one part remains. It is science which will tell you this thing, but the scientist doesn't know Quran. So there is a problem. That 1/3 remains in dark. Established science match the Quran? Yes, but not necessarily. It's not necessary that I prove from the science Sab'a Samawat. Now I know from my science, from my astronomy, that there are 7 layers of my this is the ionosphere, the photosphere, and this of this air that which is from here till the last, you can say, the solar system. But whether Quran is saying this thing, I don't know. May be this thing, may not be this thing. Can an observation be wrong? No, but the explanation may be. Because the gravity was there, Newton understood it in one way, Einstein understood it in completely different way. Newton said that gravity is due to mass. Einstein said gravity has nothing to do with mass. It is something external property. It is geometrical property. It depends on the geometry. Both the results were coming out to be the same, but the interpretation was 100% different from each other. So the interpretation may be different, the things will remain the same.
What if both are not agreeing? So don't panic. Don't start disbelief. If they are not agreeing, wait, things will get clear. This I have learned so far, that wait is the best solution. And time after time, this wait has proved to be very fruitful. Science is the explanation, but it is limited for science only in the world. Science is for science. अब अगर for example you ask me that prove me from your science what is God or where is God, how can I prove? I can't, because it's not my subject of science. This I can't do. So what will this mean? That science is explaining all the things? No, only science, but to some extent, not all of it. So the creation of universe from the start to the normal to the end means God created this whole cosmos with kun fayakun. हो जा तो बस हो गई, लेकिन इसमें कुछ अरसा गुजरा है, गुजरा तो है, साइंटिफिक एविडेंसेस तो है, कुरान से एविडेंस है कि अरसा गुजरा है, वहाँ पे भी है, तो फिर तो मसला नहीं रहा। फिर तो काउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि कुरान एक कुछ साल बता रहे हो और साइंस कुछ और साल बता रही हो। फॉर एग्जांपल कुरान कहेगा 6 दिन में बने हैं और साइंस कहेगा कि 14 बिलियन ईयर्स हो गए। तो 6 दिन और 14 बिलियन ईयर्स का तो इतना फर्क तो कम से कम नहीं होना चाहिए। कुछ क्लोज एक 15 के दूसरा 14 के तो बस ठीक है, बात हो जाएगी, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट? तो कुन फयकून से हो सकता है अल्लाह की अपनी हिकमत वो इसको टाइम दे रहे। यानी फॉर एग्जांपल जब हम आम उगाते हैं तो पहले जो है ना उसका बीज बोते हैं, फिर कुछ ऐसे के लिए वेट करते हैं, पौधा बड़ा होता है, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर वो फल देने लगता है। तो ये टाइम तो गुजरना है फल आने में। तो इस कायनात का भी पल है ना, ये भी एक बीज बोया गया है, मैच्योर होगा, फल देगा और फिर खत्म हो जाएगा। इस तरह का दरख्त भी खत्म हो जाता है। Sir, Einstein has said that the time is the relevant. So the time as we see, it doesn't mean that time exists as it in that. Okay. So 14 billion years and 6 days can be similar because the time is in our mind, as the quantum physics told by Einstein. Yes. Okay. We will address this question again, but if it will not get clear to you when we will finish, so you keep your question with you, we will address this one, because in this one discussion at the end is the most fruitful thing, because what I knew I just shared with you, you may have your question, so if I will be able to answer them, I will do. If not, then I can go and search for it and think over it. It's not necessary I will know everything. So from the start to the normal to the end. Now what the science says? Science says that a big explosion occurred. Gravity pulled the debris to form entities, which we call the Big Bang. Big Bang means the huge explosion. And the debris was, you can say the gravity was collecting the debris and different things were forming. Before the Big Bang, a white hole and opposite to a black hole existed. These are the scientific observation I am telling you. यानी धमाका हो रहा है, तो धमाके के लिए तो बारूद कहाँ से आना चाहिए ना? तो बारूद कहाँ से तेरा आया? एक्सप्लोजन हो रहा है,
एक्सप्लोजन से पहले कुछ होना चाहिए, वो एक्सप्लोड करे. The formation of billions of galaxies, stars, and expanding universe. Until 1970, we were not aware of the expanding universe, but now we know about this. And the Milky Way galaxy, which is our galaxy, the solar system, Nizam-e-Shamsi, and our planet in it, means the earth that we have. Okay. Now, the Quran addresses these things in the same manner. This one is probably in Surah Isra. Yes, Surah Isra. 21 is Surah Isra. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. You see here, your intellect has been hit again. सब कुछ बता दिया यहाँ से यहाँ तक. यानी क्या जो इनकार कर रहे हैं कि ये जो समावात थे और ये जो जमीन थे, ये तो आपस में लिपटे हुए थे, रत्कन, चिमटे हुए, और हमने इनको ब्लास्ट किया. हमने इनको फतकनाहुमा means blasting it out. वजालना मिनल माइ कुल्ल शैइन है, और पानी से ही हमने तमाम जानवरों को बनाया. अफला युमिनून. यहाँ पे वो कॉमन इंटेलेक्ट पे हिट होता है. यहाँ पे साइंस की बात चल रही है, लेकिन इंटेलेक्ट यहाँ पे हिट हो जाता है, क्योंकि ये एड्रेस करेगा वाई को. क्यों? तो आप कितनी मान लो, इसलिए तो ये आपको हिट कर रहा है. वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन. I created with my hand this cosmos and I am expanding it. अब जब तक साइंस ने नहीं कहा था कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इस आयत की समझ नहीं आ रही थी. लोग इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस कर रहे थे. कोई कहता था कि कायनात अल्लाह ने अपने हाथ से बनाई और वो इसे वसअत दे सकता है. कोई कहता है और अल्लाह ही है जो इसे वसीर कर सकता है. लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि ये तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का बयान है, ये तो बिग बैंग का बयान है. समझ आ गई कि ये तो एक्सपेंड हो रहा है. ज़ाहिर है धमाका होते हैं तो फिर उसके जो परखच्चे होते हैं, जो पीसेस होते हैं, वो उड़ते हैं, वो जा रहे होते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से. So वहाँ पे मैंने टाइटल रखा था फ्रॉम स्टार्ट टू द नॉर्मल टू द एंड. यहाँ पे एंड की बात हो रही है. फर्क. So wait till this everything will go to white smoke again. Dukhan. You know, Dukhan is the name of God as well. It has been used in Holy Quran 2 times. One is here, and this one is the last one, and in another place in Surah Dukhan itself, it is used as the start point. And all this thing was Dukhan, and then I just created everything from it. So it is addressing like this one. But we cannot understand all these unless and until we understand science first. तफसीर तो साइंस है. कुरान कौन समझाएगा? साइंस समझाएगा. उसका 1/3 पोर्शन साइंस से समझाएगा. The creation of skies and earth. This whole story started 14 billion years ago. And Quran says it is 6 days. This is a big difference between the two. अगर हम कुरान को इसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन अब देखते हैं इसमें तदब्बुर करते हैं, means we study it with some more insight into it. So let me first say the science. Earth is around 4 billion years old. The whole cosmos is around
13.77 billion years old, in which 60 billion